औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सो ये हमारी पहला लाइव सेशन है जिसमें हम लोग एक इंटर्नशिप का जो पूरा प्रोग्राम है उसको डिस्कस करते हुए काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी मुख्तलिफ जगहों से एक्सेस मिल रहा है। मैं इसके ऊपर 1 मिनट बात करता हूँ। यूसुफ, आर वी रिकॉर्डिंग दिस थिंग और नॉट? वी आर रिकॉर्डिंग और नॉट? बिकॉज समटाइम्स होता है कि फिर तुम्हारा मसला हो जाता है और फिर वो यूट्यूब पे सही लाइव नहीं जा पाता, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट? सो वी हैव टू मेक श्योर कि रिकॉर्डेड हो रहा हो ना, ठीक है? सो मैं देख लेता हूँ उसको ताकि मेरे पास भी लाइव चल रहा हो। सो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सो ये हमारा लाइव सेशन है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा एक प्रोजेक्ट के ऊपर। उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक दिखाया जाएगा। उस प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया जाएगा, कैसे नेटवर्क डिज़ाइन होगा, कैसे नेटवर्क बनेगा, कस्टमर डेटा कहाँ पर होगा, ऑल दीज थिंग्स इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मगर जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो उसमें कुछ उसके की पिलर्स होते हैं जिस पे हम बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दोस थिंग्स। जो शुरू के इंटर्नशिप के जो सेशंस हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे ताकि लोगों को पता चले कि काम क्या मिल रहा है। हम हो सकता है कि 2-3 महीने तक इसको लाइव हम लोग ब्रॉडकास्ट करें। वी डू दिस फॉर कपल ऑफ मंथ्स। द रीजन इज के वी वांट टू मेक श्योर के देयर आर मोर देन 18,000 स्टूडेंट्स, 18,600 स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम, जो कि इसको आके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो भी आए उसको एक्सेस मिल जाए, एंड वेदर दे आर लेगेसी स्टूडेंट्स और न्यू डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स, व्हाटएवर द केसेस, वो उसको आके इसमें बैठ सके। इस इंटर्नशिप के अंदर रियल सिस्टम्स के ऊपर बात हो रही है। रियल जो है ना सिस्टम्स को डिजाइन करना, बनाना, सबके ऊपर काम हो रहा है। ये एसेंशियली तुम लोगों की अल्टीमेट इंटरव्यू प्रिपरेशन है। ये एसेंशियली आप सब लोगों का जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन सीखना है। सो वी आर ट्रू टू अवर वर्ड। सो व्हाट वी आर टेलिंग यू, व्हाट वी आर टीचिंग यू इज द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो जॉब डिस्क्रिप्शन है। सो after doing this whole project, which will last for 6 months, because every project is different. हमने सबसे पहले PCI DSS का प्रोजेक्ट उठाया। इसके अंदर डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी या कॉर्ड्स या कैट या वैट सब पढ़ सकते हैं। इसके अंदर डेवऑप्स वाले लोग काम कर सकते हैं, उनका काम है। सिसऑप्स का काम है। इसमें AI ऑप्स का काम है। इसमें ब्लॉकचेन है। दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? ऑफेंसिव सिक्योरिटी है। सो ऑल द की जो हमारे पास जितने भी हमारे पास जो एडवांसमेंट ट्रैक्स हैं और जो डिप्लोमास हैं, उन सब के अंदर से कोर्सेज को होते हुए आप ये कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप वो सारे कोर्सेज कर चुके हों तो आप उसमें बैठे, नहीं, दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट। ये ज़रूर है कि अगर आप उसको करके आएंगे तो आपको आसानी होगी। ये ज़रूर है कि अगर आप उसको कर चुके हैं तो आसानी होगी। However, whatever the case is, there is no prerequisite for sitting in this internship. But there's a huge however, ठीक है ना? I'm not going to say there's a huge but, I'm going to say there's a huge however. एक बड़ा सवालिया निशान है, वो ये है कि आपको कोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जब कोर्सेज पढ़ेंगे और फिर जाके इसको आप देखेंगे, then you'll be able to correlate better. फिर आप कंपेयर कर सकेंगे ना कि यार मुझे यहाँ कैसे काम करना है, मुझे वहाँ कैसे काम करना है। नाउ आई अंडरस्टैंड, मुझे सब चीज़ें समझ आ रही हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो पूरा ये 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है PCI DSS के ऊपर, ये एक लेवल 1 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर होगा। लेवल 1 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, लेवल 4 क्या है, सर्विस प्रोवाइडर किसको कहते हैं, मर्चेंट क्या होता है, एक्वायरिंग बैंक क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन PCI DSS. So if you want to do this course effectively, आपको डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी के जो इनिशियल कोर्सेज हैं उन पर तवज्जो देना आपकी ज़रूरी है। जैसे पाइथन लिनक्स आपने कर लिया, CSSP को पढ़ना ज़रूरी है, रैल का कोर्स करना ज़रूरी है, ISO 27001, PCI DSS, Elasticsearch, ये तमाम कोर्सेज हैं। मैथमेटिकल कोर्सेज यू कैन स्किप इट, आप उसको फिलहाल स्किप कर सकते हैं। यू कैन वॉच द वीडियोज, यू डोंट हैव टू गो थ्रू देम, बट यू शुड, आई मीन
For the sake of this project, you can skip it because mathematics आपको industry में इतनी नहीं मिलेगी जितना आपको दूसरा काम मिलेगा. So we are focusing on that thing. अगर आप DevOps पढ़ रहे हैं, then you should do the level 3 courses, the deployment cloud cybersecurity है और deployment DevOps अगर आप कर रहे हैं, तो then you should also be able to do Dockers. There is Dockers here. There is Kubernetes here. There is CI/CD here. There are all the key things जो आपने जितनी चीजें सीखी हैं सब इसके अंदर आएंगी. अगर आप SysOps कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट SysOps, तो उसका तमाम जो डिजाइन, आर्किटेक्चर, सर्विसेज को यूज करना सब इसमें आएगा. और इसमें बहुत सारी चीजें हैं. अगर आप AI कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट AI कर रहे हैं, RQF लेवल 4 का, उसके अंदर भी तमाम चीजें इसके अंदर ऑटोमेशन के जरिए आएंगी. अगेन देयर इज नो मैथमेटिक्स. जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, मैथमेटिक्स नहीं है. एंड दिस विल बी द डिफरेंस. आपको ये सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आएगा कि why the universities are failing students. यूनिवर्सिटीज क्यों लोगों को फेल कर रही हैं? The reason is कि वो लोगों को वो पढ़ाती हैं चीजें जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है. Because when you go to work, you work on completely different things. तो जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं, वो आपको यहाँ पर सारी की सारी जरूरी हैं. Now जो मैथमेटिक्स है, the reason we put mathematics there is because वो RQF की accreditation के लिए जरूरी था कि इसमें एक मैथमेटिकल एलिमेंट हो, राइट? बट 90% ऑफ द कोर्स जो है हमारा, इट्स ऑल हैंड्स ऑन, प्योर हैंड्स ऑन. ठीक है. आप इन तमाम, अगर आपके पास, और अगर आप AI ऑप्स कर रहे हैं जिसमें DevOps, SysOps, AI एंड ये सब कुछ है, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. दुनिया में जो भी ये प्रोजेक्ट करता है, ये 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है. जिसने ये 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट किया, वो अपनी CV में ये सारी चीजें लिख सकेगा, डिपेंडिंग कि वो क्या ट्रैक कर रहा है. अगर उसने डिप्लोमेंट क्लाउड साइबर सिक्योरिटी कर रहा है तो एक स्पेसिफिक चीजें लिख सकेगा, एंड वी विल प्रोवाइड इट टू यू. अगर वो डेवऑप्स में डिप्लोमा कर रहा है, RQF लेवल 4 में एक स्पेसिफिक चीजें लिख सकेगा. अगर सिसऑप्स में कर रहा है डिप्लोमा RQF, तो अलग चीजें लिख सकेगा. अगर वो डेवऑप्स सिसऑप्स मिला के कर रहा है, ज्यादा चीजें लिख सकेगा. अगर वो AI ऑप्स कर रहा है, और ज्यादा चीजें लिख सकेगा, बिकॉज वो हर एरियाज में काम कर रहा होगा. दैट पर्सन विल बी वर्किंग इन ईच एंड एवरी एरिया, राइट? सो यहाँ आपको नजर आएगा, यू विल बी एबल टू सी कि अब काम कैसे होता है. ये सारा जो काम है, ये आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर इसके बाद ये जो टीम्स है मेरी, ये सारी टीम्स जाएंगी, इसके ऊपर डिजाइन करेंगी, और फिर इसके ऊपर काम करके आपके सामने ला के रखेंगे. देन यू विल बी एबल टू वॉच एंड सी, अच्छा यार, दिस इज हाउ यू डू दिस. इज जब हम क्लाउड पे जाते हैं तो कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, AWS की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी आर डूइंग दिस ऑन AWS, बट देयर इज Azure, देयर इज IBM, देयर इज GCP. We are also looking into Alibaba and some of the Oracle and SAP and some of the other cloud providers as well. So इसका बहुत बड़ा काम है, लेकिन इन सब को सीखने के लिए, करने के लिए, you must ensure कि आप वो कोर्सेज पढ़ते हुए आए. यहाँ पर जो सबसे पावरफुल कोर्स है, वो जो सबसे बेसिक कोर्स है, वो शुरू होता है AI डिप्लोमेंट क्लाउड साइबर सिक्योरिटी से, लेकिन उसके बाद इट कीप्स ऑन गोइंग अप. सो डिप्लोमेंट क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, देन डिप्लोमा इन DevOps, डिप्लोमा इन SysOps, डिप्लोमा इन AI. these are all RQF level 4. और फिर इसके ऊपर अगर आप आगे मिला दें तो आगे चीजें चली जाती हैं, राइट? ये पहली मीटिंग है, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इन अदर लैंग्वेजेस दिस विल बी रिकॉर्डेड इन अदर लैंग्वेजेस एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर देम, राइट? There will be a lag of 1 week or something like that, but then it will be available. This meeting will be precisely of 1 hour. 1 hour. 1 hour से ज़्यादा नहीं होगी, because I will be giving them a lot of work. So I will give them the work. Next time they have to come to me and they have to explain how they have done all of these things. ठीक है? मैं उनको बहुत सारा काम दूंगा, फिर वो जाएंगे, उसके ऊपर काम करके आपको ला के दिखाएंगे. This is how I have done all of these things. ठीक है? So ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, this project is all about PCI DSS level 1 payment service provider. As I said, PCI DSS के अंदर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड. दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, हर जगह क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस किया जाता है. अगर आप देखें कि बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, wherever you go you have to make a payment. It will be through debit card or credit card. जहाँ पर वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स, अलीपे, whatever जिसका जो भी यूनियन पे, whatever द जो कार्ड पे वो है, everyone follows similar standards. Now यूनियन पे का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है जो चाइना में है, बट जितनी यूरोपियन कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, they all follow one standard which is PCI DSS. So the reason to pick this up is कि आप दुनिया में मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, whether it is SOC, NOC,
governance, IT, DevOps, SysOps, AI Ops, digital transformation, no matter what the case is. Okay. So यहाँ पर who's the BA? Can anyone raise their hands? Who's the BA? Whoever is the BA from my side needs to document these things. Okay, na Atika? So you have to document all of these things in a very, very concise fashion. Okay. If I will allow you to talk, all of you, one by one, at the very end. But right now, take notes. Okay, take notes. Because we have to do this for at least 4 weeks. 4 to 6 weeks, we have to trim down everything. We have to finalize a project plan. Once project plan ban jaye, then we have to go in and mention all of the key things in a very, very clear fashion, right? So, sabse pehle, as I said, this is a level 1 payment service provider on AWS. This is the name of the project. Level 1 payment service provider, network on AWS cloud. ये हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. जो सबसे पहली चीज है ये है. प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट के जो यूसुफ तुमने मुझे एक पूरा प्रोजेक्ट का जो पूरा प्लान होता है जिसके अंदर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, उसके स्टेक होल्डर्स एंड की पर्सनल्स के नाम लिखे हुए हैं, राइट? So that's the first thing you need to finalize. Write it down, Yusuf, and I'm going to provide you my notes, but you need to write down everything. Second thing है उसकी हमें feasibility study करनी पड़ेगी to understand potential challenges. We need to perform a high level feasibility study that we are going towards cloud. हम customer data को कैसे protect करेंगे, हमारी क्या responsibility है और AWS की क्या responsibility है, because we have decided as an organization कि हम AWS के ऊपर level 1 payment service provider का network बनाने जा रहे हैं. We're going to build that network, हम उसको बनाएंगे, मगर उसमें हमारी क्या responsibility है और AWS की क्या responsibility है, right? Because cloud पे जाने का मकसद ये नहीं है कि सारी responsibility खत्म हो गई. Keep this in mind. जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये interview preparation है तुम लोगों की. This is your interview preparation. When you go, जब तुम कहीं जाओगे और तुमसे बोलेंगे कि भाई we are going towards the cloud. Who is responsible for what? ठीक है ना? So does this mean that AWS is responsible for everything once we start using the cloud? The answer is a big resounding no. नहीं, ऐसा नहीं है. We are still responsible. So we are responsible for customer data. We are responsible for our own platform, applications, identity access management, all the key things. Operating system में क्या हो रहा है? Network and firewall configuration क्या है? Client side data के ऊपर क्या काम होगा? Encryption कैसी होगी? Data integrity कैसे होगी? Authentication में हम क्या करेंगे? Server side encryption, file systems हैं, data की encryption कैसे हो रही है? Network traffic की protection, integrity. There's a lot of things. ये सब चीजें आएंगी. लेकिन AWS की क्या responsibility है? Responsible for the security of the cloud. AWS जो है वो responsible है software पे, compute, storage, database, networking, जो उनकी नीचे bottom layer है. ठीक है? उसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाया भी है and I will share it with you, but this is what you have to go through all the key things to understand कि हम क्या करने चाहते हैं, right? So ये एक बड़ा अच्छा डायग्राम है. This is a very nice diagram. It explains all the key things. As a customer, ये हमारी responsibility है, and as a cloud provider, this is their responsibility, right? So know this perfectly. और एक एक चीज को हमने डॉक्यूमेंट करना है. We have to document and build and show it to these students of ours who are going through the internship program, ताकि उनको समझ आए कि हो क्या रहा है, what is happening. आप यहाँ पर policies, procedures, project plan, उसकी configuration कैसे बनाना है, कैसे खड़ा करना है, कैसे चलाना है, you'll be able to see everything. If you want to do this thing, you can buy some more tokens from us, or you can go and do this on your own on AWS cloud, but we'll be able to provide you those things. That's coming. Yeah, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. It's already coming. So ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. This is extremely important. So Yusuf, the first thing is project का वो. Second, project की initialization. उसके अंदर document की business requirement, document business requirements and expectations. हमारी क्या business requirements है? As a level 1 service provider, what are our, as a PCI DSS level 1 payment service provider, what are our business requirements? Protect customer data. That's number 1 requirement, because we have millions of credit cards on our side.
एक्सपेक्टेशन हमारी ये कि हमने उसको सिक्योर करना है और कस्टमर्स के डेटा को सिक्योर करना है. दैट इज अवर की रिक्वायरमेंट्स. Expectation, we have to basically comply with all the privacy and security regulations. इस पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप भी है. So we have to define the scope of the project, schedule, budgets and deliverables. So पहली जो हेडिंग है which is project initialization, जिसके अंदर मैंने आपको बताया यूसुफ, we have to mention all the key things. ठीक है ना, सारी की थिंग्स को हमने मेंशन करना है. एंड वी मस्ट इंश्योर कि वो तमाम चीज़ें हमारी जो हैं वो प्रॉपर्ली डिजाइंड हो, प्रॉपर्ली उसमें लिखी हुई हो, एंड एवरीवन नोज एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन. ओके, सो इफ आई हैव टू शो यू अ हाई लेवल प्रोजेक्ट प्लान एंड लेट मी शो यू दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. वी मस्ट इंश्योर कि हमारी जितनी तमाम चीज़ें हैं इट्स ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड. So इस मीटिंग के अंदर we have to go through all the key things, okay? So I'm going to show you that. This is what I created. ये मैंने बनाया था तुम लोगों को हैंड ओवर करने के लिए, okay? So the first thing is project initialization. We initialize the project. Yusuf, you are responsible for this, okay? So you are responsible for this thing along with your team and the BAs, ठीक है ना, जिनका काम है सारा कि डॉक्यूमेंट करें. Establish project deliverables, objectives, stakeholders and key personnel. आपने मुझे define करके बताना. This is extremely important, Yusuf. Otherwise, I don't know कि कौन सी चीज कहाँ पर है. ठीक है? So this needs to be done perfectly and in a very, very clear fashion. Secondly, conduct feasibility. Quick feasibility study होनी चाहिए जो कि BAs करेंगे आपके साथ. Document business requirements and expectations and define the scope of the project. Schedules, budget and deliverables. ये सबको define कर देना है. This is a 6 months project, Yusuf. This is a 6 months project. 6 months से ज्यादा हमको आगे नहीं जाना. Okay? इसके बाद आता है project plan. Project plan में हमने पूरा define करना है कि हमारा system architecture क्या है. ठीक है? At a high level हमारा system architecture क्या है. Now there is a reference architecture that we are going to utilize. हमने एक reference architecture बनाया है. बट ये रेफरेंस आर्किटेक्चर है. दिस इज जस्ट अ रेफरेंस आर्किटेक्चर. इसके अंदर जो दूसरा काम होगा, वी स्टिल हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द थिंग्स. इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं, जो सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं, दिस इज अ हाई लेवल नेटवर्क डायग्राम. देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम्स. मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क डायग्राम्स होते हैं जो तुम लोग को बनाने होंगे. आई हैव गिवन यू अ हाई लेवल नेटवर्क डायग्राम, मगर इसके अंदर लो लेवल में बहुत सारी चीजें आएंगी. Amazon वेफ, हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज करेंगे. दिस इज रिक्वायरमेंट. तो जब आप लोग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लिखोगे तो all the PCI DSS requirements are the business requirements. We have to comply with those business requirements, right? So उसके लिए आपकी segmentation requirements क्या हैं, नेटवर्क कैसे बनाना है, कौन सी सर्विसेज लगानी है, all of these things, ये सब चीजें वहां पर जाएंगी. कहाँ पर हमने कंटेनर्स डालना है, दिस इज ऑल डेवऑप्स. ये सारा जो है डेवऑप्स से ऑप्स मिलाकर है. इसके अंदर फिर AI ऑप्स पूरी चीजों को ऑर्केस्ट्रेट कैसे करना है. दिस अ टन ऑफ थिंग्स. यहाँ पर जेंकिंस सर्वर CI/CD है या हम AWS का अपना यूज करेंगे. अगेन दिस इज अ रेफरेंस आर्किटेक्चर. व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग इट, वी मे यूज CI/CD, डिफरेंट सर्विसेज फ्रॉम AWS, कोड डिप्लॉय, कोड कमिट, कोड कनेक्ट, ऑल ऑफ दोज डिफरेंट थिंग्स. हम उसकी डिफरेंट सर्विसेज यूज कर सकते हैं. बट यू नीड टू नो कि दिस इज अ हाई लेवल आर्किटेक्चर जो मैंने आपको दिया है. बट देन यू हैव टू क्रिएट एंड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड आई विल हेल्प यू मेकिंग श्योर कि यू आर ऑन द राइट पाथ. Okay, so ये चीजें हो गई. The second thing is identify system architecture, including the design of all the necessary components, application, databases, networking, etc. इन तमाम को हमने identify करना है. So there's a high level network diagram. अब इसके अंदर आपको detailed network diagram बनाना है और हर सर्विस का अलग diagram होगा. जैसे जो हमारी DevOps की टीम है, एप्लीकेशन कंटेनर्स को हम कैसे रख रहे हैं, इस पूरे को अलग से एक नेटवर्क डायग्राम में ब्रेक करना है ताकि जो DevOps कर रहे हैं they understand the Fargate container platform कैसे काम करता है. They understand Elastic Container Services कैसे काम करती है. They understand application को कैसे containerize में खड़ा करना है, कौन सी कंटेनर में जा रही, कौन सी नहीं जा रही, कौन से क्या होता है, क्या नहीं होता. All of these things. इन सब के ऊपर अलग अलग नेटवर्क डायग्राम. So this will break into multiple network diagrams. ठीक है ना? In detail and high level, low level diagrams इसके ऊपर ब्रेक होंगे. इन तमाम चीजों को आपने अलग अलग ब्रेक करना है. ठीक है? There's a lot of work. That is why this is going to take 6 months to complete. But after the 6 months, you can go for any job in any industry
बिकॉज PCI DSS के जो कंट्रोल्स हैं वो दुनिया की तमाम कंट्रोल्स तमाम जगह पे चले जाएं, दीज आर द सेम कंट्रोल्स। देखो दुनिया में तुम कोई भी काम करो, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, रोबोटिक्स इंडस्ट्री हो, मिलिट्री हो, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर हो, कहीं पर भी चले जाओ, इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग विच इज डेटा प्रोटेक्शन। उस डेटा प्रोटेक्शन के जो कंट्रोल्स है ना, दीज आर द सेम कंट्रोल्स, सो यू डिप्लॉय द सेम कंट्रोल्स प्रीटी मच। जितनी फाइनेंस इंडस्ट्री एडवांस है दुनिया में, इतनी कोई इंडस्ट्री एडवांस नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल लर्न ऑल द की थिंग्स, ठीक है। आई नीड हारिस हियर एज वेल, ठीक है। आई नीड हारिस हियर, इफ यू कैन प्लीज ब्रिंग हिम फॉरवर्ड एज वेल, if you can make him contact him if Haris from the states is here or not. So ये तमाम चीजों के ऊपर तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, and you have to develop these things for me. The second thing is identify AWS services. कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हम लोग यूटिलाइज करेंगे? There are a ton of services. AWS has more than, I would say, 500 services available, cloud services. So which services will we be using? हम कौन सी यूज कर रहे होंगे? AWS की कौन सी सर्विसेज यूज करेंगे? कौन कौन सी सर्विसेज हमारे लिए जरूरी हैं? ये सारी चीजों को हमने डिफाइन करना है और बताना है। दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क। तो हमने इसको सबको एक्सप्लेन करके समझाना है और वो एक्सप्लेन करना है कि दीज आर द की सर्विसेज जिसके ऊपर हम काम करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, डिफाइन टीम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टीम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले, I mean, I would like to highlight open source applications required. So we will utilize as much AWS services as possible, लेकिन हम open source पे भी रहेंगे. So open source के applications को भी आपने देखना है. The complete architecture over here is Linux based. Every single thing is Linux based. ये याद रखना. Okay. Team roles and responsibilities. What is Mamoon Bashir doing? You know, what is the DevOps team is doing? Who is responsible in the DevOps? Who is responsible in SecOps? Who is responsible in SysOps? कौन किसमें क्या responsibility है? Everything needs to be written down and presented to our interns so that they can see, okay यार, टीम में कैसे काम होता है. So when you go in any organization, दुनिया में तुम किसी organization में चले जाओ, तमाम दुनिया के organization में इसी तरीके से काम होता है. That's exactly how work is done. Develop a project timeline with milestones and key deliverables. The most important thing. This needs to be done in ERP next. ERP next के अंदर आप लोगों ने सारा काम करना है और आप लोगों ने दिखाना है ERP next के अंदर कि हमारे जो milestones हैं, हमने प्रोजेक्ट कब शुरू किया? Today is 15th of June, right? 15th of June 2023 the project started and this should complete by December. Roughly 6-7 months लगेंगे because this is a big project. There's a ton of configuration. इसमें बहुत सारी configuration items हैं, systems हैं. This project की जो cost होगी, this will go to thousands and thousands of dollars, and you'll be able to see कि cost क्या होगी, and you'll be able to see कि हम cost को कैसे minimize करेंगे. We'll be minimizing the cost as well. So billing से लेकर, deployment से लेकर, architecture designing से लेकर, planning से लेकर, everything, implementation से लेकर, everything you'll be able to see. But it all depends, and that's a big but, and now I'm saying it. And it all depends कि आप कौन सा ट्रैक पढ़ रहे हैं. अगर आप डिप्लोमेंट क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो आप स्पेसिफिक टास्क कर सकेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के, सॉक की सर्विसेज के, समथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड यू विल बी एबल टू सी कि क्या है. डेवऑप्स कर रहे हैं तो ज्यादा काम कर सकेंगे, सिसऑप्स डेवऑप्स मिला के पढ़ रहे हैं और ज्यादा काम कर सकेंगे, एआई ऑप्स कर रहे हैं सब कुछ कर सकेंगे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट. एआई ऑप्स साथ ब्लॉकचेन मिला दिए और ज्यादा चीजें कर सकेंगे. So it all, because आपको सब नजर आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, कहाँ होता है. So when you apply for jobs, जब आपका इंटरव्यू होगा, that is your interview. इससे बाहर कोई चीज नहीं आ सकती. I mean, whatever they're going to ask you, हमने HR की सब चीजें आपको अलग करवा रहे हैं, हर चीजें आपको अलग करवा रहे हैं, नेटवर्क आपके सामने अलग बना के खड़ा है. This is as real as it can get. I mean, we are spending thousands of dollars, ठीक है ना, hundreds and thousands of dollars just to teach you. हम लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं टीच करने के लिए काम कैसे होता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो यू विल लर्न एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. और ये इस बात की जमानत करेगा आपको कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाके जॉब कर सकते हो, जिस जगह बैठे हो वहां से बाहर अप्लाई कर सकते हो,
आप लोगों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे. एंड व्हेन यू पुट दिस ऑन योर रेज्यूमे, जब आप अपने रेज्यूमे में डालते हो, ठीक है, कि मैंने ये सारा काम किया, इनिशियलाइजेशन से लेकर, प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर, इम्प्लीमेंटेशन से लेकर, टेस्टिंग से, कंप्लायंस ऑडिट से, ट्रेनिंग से, डिप्लॉयमेंट से, maintenance and continuous improvement, everything. I have been the part of the whole organization, working in different teams for the whole thing. This is your interview. I mean, this covers multiple jobs, and you will know कि कौन-कौन सी jobs cover up होंगी. Okay. Develop a project timeline. So set up a process for communication and reporting within the team. So you have to set, Yusuf, you have to set this up. ERP next के अंदर तुम लोग communicate करोगे, और जितने interns बैठे हुए हैं, they all have to be part of the ERP next. If we are able to get all the things sorted out, वो जो भी है, or whatever the communication processes is needs to be established. ठीक है? That needs to be established. Whatever we discuss here, तुम्हारी जितनी live classes हैं, हमारी जो live classes हैं, वो सब इन classes में तब्दील हो जाएंगे. Because we are doing all the work here. The whole CCSP, the whole ISSAP, all these things you will be studying here. आप सब यहाँ कर रहे होंगे. Develop a risk management plan. ये बहुत important है कि हमारा risk management plan क्या है. What is the risk management plan? ठीक है ना? ये हमने करना है. एक detailed risk management plan हो, risk assessments हो जो हमने बाद में करनी है, दिखाना है, सब कुछ करना है. There's a ton of things जो हमें सब कुछ दिखानी होंगी, काम अच्छे तरीके से करना होगा. ठीक है? So ये सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलना है, and you must ensure कि वो तमाम चीज़ें हमारी properly होती हुए आ रही हों. ठीक है? Yusuf, you need to ensure कि हमारी जो YouTube और सब जो videos हैं वो properly चल रही हों. Just ensure that everything is running smoothly. Implementation. Setting up necessary AWS services, EC2 instance, S3 buckets, RDS, VPC, etc. ये तमाम जो चीज़ें, and you will be using AWS, PCI, DSS, Quick Start Reference Guide. ठीक है? You will be using that because उसमें उन्होंने पूरा बताया है कि तुम लोगों को किस तरीके से network segmentation रखनी है. ठीक है? कौन से protocols को कहाँ खोलना है, क्या allow करना है. If you want to utilize Kubernetes, तो Kubernetes कैसे करना है. How Fargate platform, is it compliant or not? There's a lot of things because इसके network के अंदर you will be able to see that attacks will be happening. As soon as the network is up, you will see attacks हो रहे होंगे. There will be lots of things going on. So implement open source applications required for the business requirements. हमारी कौन-कौन सी open source requirements हैं, applications जिनको हमें utilize करना है, payment processing की, customer settlement की, ये तमाम छोटी-छोटी applications हैं. You need to run these applications. You need to source these applications, and you need to implement these applications. That comes under Shamsi's team. Shamsi's team is responsible for these things. ठीक है? जो उसके अंदर काम करते हैं. Establish networking configuration, ensuring secure communication, isolation of sensitive data, and monitoring. ये एक-एक चीज जो है ना, एक-एक line, this breaks into multiple things. ठीक है? This breaks into multiple things. Network configuration कैसे establish करनी है? That needs to be done in a very perfect manner. And this is all very simple. Itna complicated nahi hai. When you start going in deeper, you will know exactly how things are done. Iske baad hai identity access management rules for secure access to services. Tamam jo interns hain, they should be given access to AWS, whatever they are doing, and they should be able to see और उनको सारे infrastructure as a code के तमाम templates, configurations नजर आए. They can see the configurations. They should be able to see the configuration. What are the configurations? So as per their track, जो services हम divide करेंगे, so you have to divide the services as per the track. So CI/CD, DevOps, some of these services are only available in DevOps. Some of these services are only available in SysOps. Some of these services are available in L3, Diploma. And AI Ops is different. So जो जिसमें पढ़ रहा है, they should be able to go in and look at the template or the configuration or the running of those servers through the AWS account. So ये आपको करना है. Okay? So इसके लिए जो हमारी SecOps team है, they have to, जो SysOps की team है, they have to make the preparation to make sure that those things are done. ये आपको करना पड़ेगा. Establish identity and access management rules for secure access to services. Apply encryption to data at rest and in transit. कौन सी encryption लगाओगे? File level encryption, record level encryption, database के अंदर encryption, ठीक है?
what kind of encryption are we going to use, how are we going to rotate the keys, uski key rotations kya hai, all of these things. Isme bahut sare sawalat hain. There's a ton of questions that we have to look into, okay, that you'll be going through as well. Identity, iske baad hai integrate AWS WAF and Shield for web application protection. Now, yahan par I have recommended AWS WAF and Shield because it's easier for us to show it to them, right? However, here's the thing. We can do this on AWS WAF or we can do this on open source WAF. Whatever is convenient for us, we will utilize it. Now, ye jo network hai, this will be completely accessible from the outside, the web layer only. So jo web layer hai, the web layer should be available from the outside. So if students would like to see, ke usko jaake dekh sakte hain, so they should be able to see. ठीक है, इस network की जो shelf life है, it's once it's completed, we will let it run there for at least 1 year. So it will be available for 1 year because we will keep on changing this network and expanding and revisiting, so on and so forth. Okay, so we'll keep on doing all of those things. Implement intrusion detection system, IDS, IPS, and we will be using AWS ka hum khud use karenge, or you can use open source. You have to give me the recommendations. So when you develop the plan, the project plan, usme tamam cheezon ko ye karna hai. And this is where you do all of those things, identify AWS services and open source applications. And that's where we define all the three. Kaun si hongi? Because there is WAF, web application firewall, there's file integrity monitoring, there is database encryption, there is database monitoring, there is identity access management, there is firewall management, there is data loss prevention, there is access control. There are a ton of things. ये तमाम चीजें जो हैं, उन सबको सिक्योर करना, रखना, बैठाना, देखना, ये बहुत ज़्यादा important है. और इनकी एक की configuration होगी जो बच्चे देखेंगे. All the kids, all the internees should be able to see, touch it, feel it, and if they want to run it, they can go and they can buy tokens and they can run it. और if अगर किसी को ये पूरा खुद ही बनाना है, आखिर में जब ये पूरा तैयार हो जाए या साथ-साथ लिख के चलते हुए बनाना है, they can buy credit from us and they can do it, or they can do it on their own, whatever they want to do. So yeah, they can just put the credit card on AWS और वो उसके हिसाब से अपने हिसाब से पूरा इसको रन करें. It's up to them. Okay. इसके बाद जो चीज आती है वो आती है टेस्टिंग. Conduct comprehensive security testing. This is where जब number 1, 2, 3 के steps पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर SecOps is responsible for this thing. SecOps का काम होगा जाओ टेस्ट करो. यहाँ पर जो level 3 में बच्चे पढ़ रहे हैं, whoever is studying level 3, all the kids, everyone who's studying level 3, they will be able to go in and do some of the things. Whoever is doing offensive security diploma, they will be able to do some of the high level testing, okay, as per their knowledge and as per the skill sets. So it all depends on what are you studying. The more are you studying, the more you'll be able to experience it and get it done. But this needs to be available, okay? Conduct functionality testing to make sure all applications and services that are running expected. This is QA. So quality assurance ke liye, Shamsur Rahman, Shamsi, you have to figure out who will be responsible for creating all the Python Selenium scripts, okay, for Python automation purposes. I mean, how are we testing all the functionality continuously? Okay? Conduct performance testing to check if the systems can handle expected workload. This is where we do smoke testing, mirror testing, stress testing, all kinds of testing. Again, only those people who are doing DevOps and SysOps will be able to see it, because this is part of the software development track that we are developing right now at the back end. However, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को फिर भी मिल जाएंगी. Whoever is doing DevOps, SysOps will be able to get experience to that. Compliance audit, we have to make sure कि हमारा पूरा का पूरा, all the key requirements of PCI DSS, and PCI DSS has a lot of requirements. All the key requirements of PCI DSS, right? जितनी भी requirements हैं, उन तमाम को हमने fulfill करना है और match करना है. We need to make sure कि वो तमाम requirements हमारी वहाँ पर जो हमारी हैं, we are meeting all the key requirements. And there's a lot of key requirements. If you look at the PCI DSS key requirements, the standard के अंदर बहुत सारी key requirements. So हमने इन सबको दिखाना है कि we are meeting all the key requirements. And there are 12 key requirements that we have to follow. Okay?
सो उन सबको दिखाते हुए हमने काम करना है. वी मस्ट इंश्योर, हमें इंश्योर करना है कि एक रिक्वायरमेंट भी जो है ना वो ऐसा ना हो कि वी आर वॉयलेटिंग एनीथिंग. हमने इंश्योर करना है कि तमाम रिक्वायरमेंट्स, व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट्स आर, वी आर मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स. यू नो, इफ आई हैव टू शो यू, ट्राइंग टू ओपन समथिंग, गिव मी 1 minute, राइट. सो यहाँ पर आपके पास PCI DSS में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं that I can show it to you. Hold on. I'm just trying to find out the PCI DSS standard so that I can show it to you. So if you go on their website, if you go on the PCI DSS website, आपको यहाँ जाकर सबसे पहले resources में जाना है, and then document library, that's where you have to go. Then scroll down and you will see PCI DSS standard जो March 2022 में release हुआ था. Just download this, ठीक है, and you will be presented with this document. ये document जो है, तुमने जो पूरा आर्किटेक्चर तुम लोगों ने बनाना है, द होल आर्किटेक्चर जब तुम लोग बनाओगे, उन सब के लिए ये जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी मीट करती हूँ, रिक्वायरमेंट 1 से लेकर रिक्वायरमेंट 12 तक. एंड कंपनीज में आमतौर पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल के काम करते हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं. सो यू हैव टू एस्टैब्लिश द की डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से लोग हैं, कहाँ पर हैं. जो ज्यादा ट्रैक्स पढ़ रहे हैं उनको तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हो. यू हैव टू फाइंड आउट who is the best man for you. ठीक है, ये तुम लोग को खुद ही देखना पड़ेगा as the project leads कि किसने कितने कोर्सेज खत्म किए. So the more किसी ने कोर्सेज पढ़ लिए हैं, they can be given more responsibility to manage things up, right? जिसने कम कोर्सेज पढ़े हुए हैं, let them complete the courses first and give them the motivation कि you should complete the courses before we allowed you to be added to these things. Okay, ये बहुत ज़्यादा important है. इसके बाद यहाँ पर आता है QSA. Now, this is all in the PCI DSS level 1 requirement. और ये हमने जो इसका जो पूरा काम है ये हमने इसमें करवाया है, level 3 डिप्लोमा में करवाया है. तो level 3 डिप्लोमा is very important. तो उसके अंदर लोगों को ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए कि QSA का ऑडिट कैसे करते हैं. Essentially it's the audit. जब आप इस पूरे स्टैंडर्ड को अपने सामने रख लें, when you put the standard in front of you, ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, you have to complete all the requirements like this. If you go here, right, and this is how you test it. तो आप एक requirement पढ़ते हैं, उसकी approach को देखते हैं, उसके purpose को देखते हैं, और उनकी तमाम चीज़ों को कैसे करते हैं. And that's how इसकी testing guide भी पूरी है. So we will follow the testing guide and you have to do and show it to me that each and every requirement is being fulfilled. ठीक है, तो जब आप लोग documentation बनाओगे तो आप लोगों को सब दिखाना है मुझे. Apply changes recommended by QSA. जो भी QSA की team internally बनती है, let me know who that team is going to be, whether that team is going to work under Osama or the GRC team, I'm not sure, but whoever that team is, I need to know. Training है and deployment है. Gradually roll out the system. Monitor the performance and stability of the system. This is very important. So we cannot deploy the system in 1 day or 1 month. Take your time, plan everything. एक एक component को plan करो. People, processes, technology. पहले identify करो people कौन से हैं. Processes क्या हैं? Everything. ठीक है? Technology components क्या हैं? Then go in and get it done. Because इससे पहले किया तो you won't be able to do it. Okay? इसके बाद जो last है, जो काम हमारा आता है, वो आता है maintenance and continuous improvement. Schedule regular audits to ensure continuous compliance. This is where SecOps will come in. SecOps continuously इस पे काम करती रहेगी. AI Ops का काम इसके अंदर है. This is where AI Ops, the SecOps, and the AI Ops. AI Ops को artificial intelligence के जरिए you have to create these things. ठीक है ना? These applications and tasks
कि जिसमें हम इनको SageMaker, OpenAI, Bard, AWS Bedrock, whatever we want to use, हम उसको यूटिलाइज करते हुए तमाम चीज़ों को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं. दिस इज वेयर AI ऑप्स कम्स इन. ठीक है, इन तमाम चीज़ों के अंदर तुम लोगों को काम आना चाहिए. एंड दिस इज वेयर डॉक्टर यासिर, Dr. Saleh, and some of these other people will be doing their work. Monitor and respond to any security incident, keep all systems and software up to date with the latest patches. Now, ये सब लोगों को आपने दिखाना है कि you have to show systems कैसे थे, scan किया, security patches आएंगे. This is a living, breathing network. ठीक है ना, इसमें लोगों की information होगी. So you must ensure कि उसको हर हालत में protect किया जाए. And then the project closure. आखिर में review the project outcomes against the initial objectives. Document lessons learned, celebrate and acknowledge the team's hard work. ये सारा काम तुम लोगों को करना है. This is the whole steps, the 9 steps that you have to follow, and you must ensure that you get the work done. Now, let me tell you something. दुनिया में तुम किसी भी टीम में हो, wherever तुम काम करते हो, चाहे तुम DevOps में काम करो, SysOps में काम करो, AI Ops में काम करो, SCADA Ops में काम करो, Blockchain में काम करो, IoT में काम, whatever you do, ठीक है? And all the emerging technologies. This is the plan, the plan you have to follow. यही plan follow करना होता है. So that's the high level plan जो हमने first meeting में discuss किया है. आप सब लोगों के बहुत सारे सवालात होंगे, ठीक है ना? Just keep on doing your studies. कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, just keep on following that. ठीक है? But sit through all of these things. As these guys जिनको मैंने task दिया है, when they go back and they start doing their work, जैसे जैसे वो काम करेंगे, then they in the next meeting, I will be asking them, what have you done for this? What have you done for this? What have you done for this? किसने क्या काम किए? किसने, who's responsible for this? So the next meeting जो हमारी होगी Thursday को, उसमें मैं पूछूंगा कि ये कहाँ तक पहुंचा? These are the 2 steps. The first step, ये कहाँ तक पहुंचा? ठीक है ना? Scope, project, schedules, budgets, deliverables, सारी चीजें हमारी कहाँ है, किधर है, वो आप उसी सूरत में बना सकते हैं when you do these first 2 things. तो ये planning, this will take at least 2 weeks. So by first week of July, you should be in a position of, that ये सब चीजें आपकी हो चुकी हैं. Because once you've done this, जब ये काम हो जाए, then you go into start deploying things. ठीक है ना? फिर तुम लोग काम शुरू कर लोगे. इसको काम शुरू हो जाएगा, नेटवर्क डिजाइनिंग का काम शुरू हो जाएगा, नेटवर्क टीम अपना काम कर रही होगी, डेवऑप्स की टीम अपना काम कर रही होगी, सिसऑप्स की टीम अपना काम कर रही होगी. जो तीनों टीम्स को पढ़ रहे हैं वो तीनों टीम्स में काम कर रहे होंगे और वो हर जगह से काम सीख रहे होंगे. जो सिर्फ लेवल 3 पढ़ रहा है वो लेवल 3 में काम कर रहा होगा, वो लेवल 3 के हिसाब से काम देगा. लेकिन मैं सारा काम तुम लोग को लेवल 3 में दूंगा. वहां से सब डिसएम्बार्क हो जाएंगे, अलग अलग ब्रांचेस में चले जाएंगे, लेकिन काम यहीं पर मिलेगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास. इसके बाद जब क्लास होगी तो मैं जो आप लोगों को मिलूंगा, you will always find me in level 3 because that is the base. Diploma in Cloud Cybersecurity is the name, but essentially if I have to name it, it is Diploma in Emerging Technologies. That is the actual name because we are covering each and every technology in here. अभी PCI DSS है, इसके बाद फिर तमाम चीजें कवर होती चलेंगी. And in your resume, you'll be able to mention all the key things. This is how, जो AI Ops कर रहा है वो अपने रेज्यूमे में लिख सकता है कि मैंने ये काम सारे किए. जो AI Ops लिख रहा है, they will be able to mention everything. जो level 3 पढ़ रहा है, they will be able to mention basically some of the things, right? Like this, like some कोई कुछ key aspects वो cover कर सकेगा. They will be able to cover these aspects. They will be able to cover these aspects. ये कुछ cover कर सकेंगे लेवल 3 में. जो SysOps पढ़ रहा है और DevOps मिला के पढ़ रहा है, they will be able to cover all of these things. जो AI Ops पढ़ रहा है, they will be able to cover all of these things, depending, क्योंकि इसमें DevOps, SysOps ये सब आ गया ना. So आपको सब चीजें नजर आ रही होंगी. ठीक है, जो सिर्फ DevOps पढ़ रहा है तो DevOps वाला सिर्फ यहाँ पर देख रहा होगा और लेवल 3 का देख रहा होगा. So ये इसके अंदर सेगमेंटेशन है. बट मैं जब काम दूंगा, when I give you the work, it will be done here, ताकि collectively सबको नजर आए. So ये मेरी key class थी. This was the first class. This class is done. The class will be precisely for 1 hour. We are done for the day. I am going to basically expect from all of you, जितने भी लोग बैठे हुए हैं,
जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, यूसुफ रियाज, you then have to go back and next time when you meet me next week, you must ensure that you have identified all the processes, you have identified the team members, and you have started the course. You have charted the course where it needs to go, and then you start moving the ship towards there, right? इसको आप लोगों को लेके जाना है, उस पर काम करना है, okay? जो इस पे काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, they should go back and do diploma in cloud cyber security की classes, DevOps की classes, SysOps की classes. रोजाना 1 घंटा यहाँ पढ़ें, 1 घंटा यहाँ पढ़ें, 1 घंटा यहाँ पढ़ें. DevOps, diploma in cloud cyber security 1 hour पर स्टडी किया, डिप्लोमा इन SysOps को पढ़ा, डिप्लोमा इन DevOps को पढ़ा. और AI अगर ज्यादा टाइम है, 4 घंटे हैं, 3-4 घंटे हैं, तो AI भी पढ़ लिया. मिला के पढ़ते हुए आराम से लेकर आओ. So by the time जब तुम सब चीजें लेकर आओगे, by the time you reach at the end, you'll be able to understand all of these things. And that's what we're doing. Okay. Jazakallah khair. This was the first class for the internship program. As we move forward, आपको इसके अंदर इसकी technical configurations, इसको deploy कैसे किया जा रहा है, WAF को कैसे configure करना है, इसमें क्या काम करना है, VPC के अंदर क्या काम करना है. I mean, essentially, आपको तमाम चीजें नजर आएंगी. You'll be able to see all the things. ठीक है. एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे कैसे काम करना है, TLS की टर्मिनेशन यहाँ पर है. आई मीन वी आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दैट, मगर इसके अंदर हम करेंगे. ग्लोबल लोड बैलेंसर है, लोकल लोड बैलेंसर है, व्हाटएवर वी आर यूजिंग. वेब सबनेट को हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया है, माइक्रो सेगमेंटेशन यूज किए कि नहीं किए. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये सब चीजों पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे. एप्लीकेशन कंटेनर्स को हम कैसे मैनेज करते हैं एज अ कंटेनर, इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज कैसे चलती हैं, उसका काम कैसे होता है, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है, सब हम आपको पढ़ा चुके हैं. बट नाउ अब आपने इस पे काम करना है. अगर आपने नहीं पढ़ा, आप इस पे बैठे रहें और साथ साथ पढ़ते रहें. सो जब आप यहाँ देख कर पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू कोरिलेट एंड कनेक्ट. और अगर आप पढ़ चुके हैं और जब आप देखेंगे, अगेन यू विल बी एबल टू कनेक्ट. दैट इज द गोल. ओके. सो ये सारा गोल है हमारा, टू गिव यू एज हैंड्स ऑन एज पॉसिबल, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट इन योर रेज्यूमे, you know, with extreme confidence, yes, I have done all of these things. Ask me, what do you want to know? Kya chahiye tumko? What do you want me to do? I mean, just ask the question. Just leave everything. Sab chodo, interview mein bolo, what do you want me to do? Do you want me to build a network? Initiate the project plan? Line up all the resources? Give you the deliverables, the cost, the budgets and everything? Identify all the components? Test the network, deploy the network, make sure it's compliant? I'm your man. or I'm your woman, whatever, right? So आप बोल सकते हैं, that gives you the confidence. इसके अंदर AI को integrate करना है. Do you want me to integrate AI in it? Yes, it's already there. Do you want me to manage DevOps, SysOps? I've done this. This is how I'm going to do it. ये तुम लोग इसमें बता सकोगे. And the same goes with blockchain. There is blockchain in here as well, which has not been shown here, but blockchain is there. This blockchain is there. There's offensive securities there. All the tracks. जितने भी tracks तुम लोगों को हमारी वेबसाइट पे नजर आए, whatever you're seeing on our website, alnafe.com, all of these things are there. I mean, we will keep on doing all the things जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है? But you will be able to see all the key things. आप इसके ऊपर सारी चीजें देख सकते हैं, कर सकते हैं, so on and so forth. अगर आप इस पे जाएं, if you go on the courses की वेबसाइट के ऊपर, ये तमाम courses जो आपको नजर आ रहे हैं, जो ये पढ़ रहा है, they will be able to do all of these things. ठीक है? सबके ऊपर आप लोग कर सकोगे, काम देख सकोगे. The most important track, in my view, is DevOps, SysOps, AI. You can add blockchain in it, you can add some other things in it, it's up to you. But वो तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं, added हैं, so on and so forth. Okay? So Jazakallah khair for your time. Next week, when we meet, we will go and discuss further. इस एक हफ्ते के अंदर go back and do the revisions of the courses and everything. Make sure कि आप उसको catch up करते हुए आएं. There is no programming here. There's a lot of containers and whatnot, but there is no programming here. So we're not making you programmers. We are making you the guys who can get the work done. मैं आप लोगों को काम करना सिखा रहा हूँ और उसको complete करना सिखा रहा हूँ. So there is no programming here. So don't be afraid of anything. Okay? Jazakallah khair. Inshallah, I will see you in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.